My dad was entirely against sending us to Pakistan at any cost. He was like, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोग जाएं. क्यों? He's like, लाहौर में पता नहीं क्या हो जाता है, लाहौर में लड़कियां निकल जाती हैं, उनको अगवा कर लेते हैं, उनके साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है. Obviously, these were the things that we were seeing at the media. हमारे देसी पेरेंट्स क्या ये कभी गलत भी हो सकते हैं? Do they always have to be right? हमारे देसी पेरेंट्स सही थोड़ा कम ही होते हैं. Like हमारी वर्कफोर्स में 4 में से सिर्फ 1 लड़की काम करती है. इसकी वजह क्या है? एक होती है फर्माबरदारी, वो आपकी बीवियों से, आपकी माओ से, आपकी बेटियों से ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है. काफ़ी ऐसी औरतें इस मुल्क के दम घुट रहे हैं, वो बोल नहीं सकती. फर्माबरदार हैं वो अच्छी औरतें हैं, वो अच्छी खातून हैं, उनके घर बसे हुए हैं और जो बोलेंगी उनके नहीं घर बसेंगे. Do you believe that Pakistan is slightly more free for women as compared to Saudi Arabia? I think definitely there is a very huge difference in how women live their days in Saudi and how it is over here. पाकिस्तान में लड़की की गलती पूरे ख़ानदान का मसला बन जाती है. लड़के की गलती उसका अपना ज़ाती फेल होता है. It's the mindset that जब एक औरत के हकूक़ की बात आती है तो सब खामोश होते हैं, लेकिन जब उस पर हक जताने की बात आती है तो सारे मर्द बन जाते हैं. Haven't taken it a bit too far कि हम दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, हम एक लेबल लगा दिए कि भाई वो बंदा तो नार्सिसिस्ट है, वो बंदा टॉक्सिक है. क्या हमारी सोसाइटी से आगे नहीं चल सकती? Obviously चल सकती, लेकिन अभी हमारी सोसाइटी उस स्टेज पे पहुंची है जब आपको नया खिलौना मिलता है ना, तो you just play around with it a lot until it breaks and then you're like, okay, you know what, there's a better way of using it. गरीब गुरबा मस्कीन हम यहाँ पे हैं, हाजा मस्कीन हाजा गरीब, जो हमारी भी जो कहते रहते हैं. कैसा लगा आपको चेंज ये between Saudi Arabia and Pakistan? I was trying to figure out how do I make my university fellows feel like I'm one of them. And I think शायद पाकिस्तान में टाइम आ गया that women need rooms of their own. जितने हमारे इर्द गिर्द इस तरह के केसेस हो रहे हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरों में औरतों को मारा जा रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है, बीवियों को मार के मार दिया जा रहा है, and there is this weird सा fear in every woman around us. क्या मज़हब फैमिली कंट्रोल को चैलेंज भी कर सकता है? Obviously it can. I feel like मज़हब में अगेन आपको वायलेंस की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि आप अपनी औरत को या अपने बच्चों को मारो. आप नहीं मार सकते. किस मुंह से कोई अज़मत आदम का नाम ले जब आदमी फरेब करे आदमी के साथ? आज हमारे साथ हुदा सईद, इंडस की खूबसूरत आवाज़. आपसे जी आज हम बात करेंगे अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट फैमिलीज, अबाउट आर्ट, अबाउट पाकिस्तान, लाइफ एंड लिविंग इन पाकिस्तान. आई कंसिडर यू टू बी समवॉट फेमिलियर विद ऑल दोज टॉपिक्स. तो हुदा जी आपका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? So I was born and raised in Saudi. I was born in Jeddah. It was a privilege to be born so near Makkah Medina. Got to experience a lot. I think मेरी काफ़ी अच्छी development हुई वहाँ पे. And I was exposed to art at a very early age by my mother, who was a teacher in a school, and she would bring back the leftover paints and stuff for us to play around with. And she would draw with us. और वहाँ से मेरे भाई और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शौक था. भाई का थोड़ा कम था, उसने कहीं बीच में छोड़ दिया. He was more into tech at that time. I continued that, and I always knew that there was this something that I just wanted to let out. हम ये समझते हैं कि हम में कुछ है. Yeah. So I just held on to that belief that yes, I definitely do think that I'm a little bit different. And the traditional path of like a career as a doctor, my dad wanted me to be a doctor. अरे क्या चक्कर है, सारी लड़कियां डॉक्टर क्यों बनती हैं हमारे यहाँ? क्योंकि I think it's the family pressure, because आपकी फैमिली में कोई भी थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होता है ना, they're like slightly more good at studying. हाँ जी बिल्कुल. Your family's like तो डॉक्टर बनेगी. जी मेरी माँ को भी ये ख्वाब था, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ. It's okay. I think what you're doing is brilliant, and I think what I did. Thank you so much. Thank you so much. But coming back to your life, so आपके ऊपर pressure था कि डॉक्टर बने, आपने कहा नहीं मैंने आर्टिस्ट बनना है. Yeah. And I wanted to go to a university, and Saudi में कोई इतनी खास universities थी नहीं. But then COVID hit. Oh dear. And I don't know if it was a good thing or a bad thing, but like my family's entire life changed in a very drastic way. My dad was entirely against sending us to Pakistan at any cost. He was like, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोग जाएं. क्यों? He's like, लाहौर में पता नहीं क्या हो जाता है, लाहौर में लड़कियां निकल जाती हैं, उनको अगवा कर लेते हैं, उनके साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है. Obviously, these were the things that we were seeing at the media, and this was the things that were being shown to us by the Pakistani news channels as well. So much of
like terrorizing कि हम खुद डरते थे, घबराते थे कि पता नहीं पाकिस्तान आएंगे तो क्या हो जाएगा. Okay. But after COVID happened, he had no other choice after keeping us there for a year in a lockdown. He was like, okay, you know what? It's getting financially very difficult. Everything is shut down. There's no work. There's nothing at all. Let's just send them all to Pakistan. And I was like, yes, finally. Now I can go to university and I can just study art and I can just continue doing what I like. So I had to fight a lot for that. I got amazing support from some of my family members. Some I had to just beg and cry a lot. I had to convince Pura Khandan to just agree upon the fact that it is okay for me to go and do my bachelor's. But it did happen. A lot of ups and downs, but it did happen. And there was just one thing that was driving me, and that was my passion for art and what I wanted to do. And now I'm here. Yeah, that's a remarkably cute story. I love it. Fantastic, fantastic. ये बताइए जी, आपका घर जद्दा, लाहौर, different places पे है, and there are different places you call home. ये घर आपके लिए sanctuary है या battlefield? So, since there is not exactly a place that I can call home at the moment, it was growing up. I thought कि जद्दा मेरा घर था. मुझे लगा कि बस यही है, यहीं पे यही मेरी ज़िंदगी और this is how it's gonna be. And when everything went weird, COVID. yeah, when everything went, बड़ा weird time था. it बहुत was weird time just था. so strange that there was no sense of belonging anywhere at all. कहीं भी नहीं. Nowhere. क्या आपको लाहौर से कोई affinity नहीं थी तब तक? आप लाहौर तो आते I रहते had थे. never been to Lahore. Never been to Lahore? Never been to Lahore. So So you lived your entire life in Jeddah? yes, I was there for 19 years. And as soon as we moved to Pakistan, I think 2 महीने बाद ही मेरा एडमिशन हो गया हुआ था और वो सारे रोने धोने ख़त्म हो गए थे और सबको मना के मैं लाहौर आ गई थी. And Lahore was so foreign to me. I had never even visited Lahore before. मगर जद्दा एक दुनिया अलहदा है, लाहौर तो उसके सामने थे पिंड है. I mean, अब क्या आपने ये तो वही बात है कि आप दुबई में 4 साल रहे हैं, उसके बाद वापस जाके सियालकोट में रहना शुरू कर दें. I don't think it's the same as that because the way 4 saal growing up somewhere. I mean, you know what I mean. Going from a very, Yeah. it's I would at least say Saudi Arabia is like a mid-level country और वो जो कहते हैं ना second world या developing country है. And Pakistan is LDC, least developed country या गरीब गुरबा मस्कीन हम यहाँ पे हैं. हाजा मस्कीन हाजा गरीब जो हमारे लोग जो कहते रहते. कैसा लगा आपको change ये between Saudi Arabia and Pakistan? So if I talk about the change that I experienced during this time, it was so drastic. It was so drastic because as soon as I moved here, I was like, I don't know any street names. I don't know how to get an Uber. I don't know how to use the maps to navigate myself around the Apparently city. तो language. I knew the language. पंजाबी. पंजाबी मैंने बाद में सीखी. मुझे उर्दू आती थी. देखिए लाहौर की लैंग्वेज जो है ना उर्दू नहीं है. लाहौर की लैंग्वेज पंजाबी है. अभी सड़क पे चलना शुरू करे उर्दू बोलने से लोग परेशान हो आते हैं. सर आप उर्दू क्यों बोल रहे हैं? पर पंजाबी उस टाइम आती ही नहीं थी. I see. So पंजाबी तो I think I just learned very recently. अब मेरी पंजाबी ठीक है. It's fine. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? अब मैंने पंजाबी बहुत चंगी आती है. Fantastic. आपकी पंजाबी तो मेरे से बेहतर हो गई है. Love it. अच्छा, so when you came to Lahore, the initial reaction was shock. What did you like about Lahore? Honestly, at that point, nothing. I was trying to figure out how do I make my university fellows feel like I'm one of them. क्यों? क्या आपको एक्सेप्ट नहीं किया? No, I felt like an outsider. I did not know what to wear to university. I did not know how, like, what to talk to these people about. They listened to a certain kind of music that I was not exposed to yet. They watched certain kind of shows that I did never even heard about. So, any of their conversation, anything that they were a part of, I was just watching them from the outside and trying to learn. जी जाहिर बात है ऐनक वाले जन आपने क्यों देखा होगा? हो क्या रहा है यहाँ पे? Right, right. So it was a very alienated feeling, I would say. So now I would say Lahore does feel a bit like home because 6 years, you make a home for yourself wherever you are. You do, you do. ये मुझे बताइए ज़रा हमारे देसी पेरेंट्स क्या ये कभी गलत भी हो सकते हैं? Do they always have to be right? हमारे देसी पेरेंट्स सही थोड़ा कम ही होते हैं क्योंकि वो जो अपने बिलीव्स लेकर आ रहे होते हैं वो थोड़े पुराने होते हैं और उनके साथ भी वो गलत बिलीव्स हुए हुए होते हैं, उनके ऊपर इम्प्लाई हुए हुए होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर पुट अंडर सो मच प्रेशर विच दे आर taught to normalize in a way and they expect the same kind of normalization from you. And obviously I feel like as our generation we
do have a lot of awareness about, what do we want for ourselves. क्या आपके ख्याल में बच्चे हमारे जो है अपने बारे में बेहतर डिसीजन ले सकते हैं अपने पेरेंट्स से? लिए not really. I wouldn't say that. वो क्यों? I think that I don't know. It's such a complicated thing because when I look at the slightly more younger generation, they feel like everything is just okay for them and it should be okay for them because it's 2026, so everything is okay. Like it's not. You have to go through a lot of experiences. You have to learn a lot. You have to reach a certain point of just having wisdom in a way where you're not being naive and you actually do understand what you're talking about. वैसे आज से कोई 100 साल पहले या कोई 150 साल पहले किसी लड़की को यूनिवर्सिटी में जाना इस मुल्क में मना था. Things change. Some people were not allowed to vote. Now they're allowed to vote. Yeah. Some people were not allowed to get an education. Now they're allowed to get an education. काफ़ी चेंजेस हमारी सोसाइटी में आई हैं जो कि शो करती हैं कि हम ज़रा तंग नजरी से ज़रा ओपन व्यू की तरफ जाते हैं. Progressive viewpoints. Yeah. Do you feel parents are always one generation behind? उनके views हमेशा एक नस्ल पीछे रहते हैं? I feel like with every generation, the kids are definitely impacting their parents to bend down a little bit, to mold a little bit into understanding their ways as well. हम इतनी पिछली generations में क्यों जा रहे हैं? I feel like अभी भी इस time पे भी a lot of girls especially are not really allowed to get education. वो अभी तक एक अजीब सा टॉपिक होता है कि क्यों, why do you want to go to a different city to get education? क्या मकसद क्या है तुम्हारा? आपको पता है फीमेल पार्टिसिपेशन फिगर्स क्या है एजुकेशन के अंदर, वर्कफोर्स के अंदर पाकिस्तान के लिए? डिसमल. लाइक हमारी वर्कफोर्स में 4 में से सिर्फ 1 लड़की काम करती है. इसकी वजह क्या है? क्या लगता है आपको? I think it's the restriction on just एक होती है फर्माबरदारी. वो आपकी बीवियों से, आपकी माओं से, आपकी बेटियों से ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है. फर्माबरदारी जिसमें ये होता है कि एक फर्माबरदारी इज़ व्हेन व्हाटएवर इज़ टोल्ड कि अच्छा दिस इज़ व्हाट यू आर गोना डू, जो मैं कह रहा हूँ आपको करना पड़ेगा. हाँ, इट्स साइलेंस. इट्स लाइक जस्ट शट योर माउथ एंड जस्ट नॉड योर हेड यस and just agree with whatever is told to you because that is what a farmabardar aurat does. Is a farmabardar aurat also silence? Yes, silence is farmabardari because when you have an opinion and whether it's right or wrong, having a voice and having the ability to voice your thoughts is not a privilege that everyone has. Of course. आपके पास आर्ट का मीडियम है, आप अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. काफ़ी ऐसी औरतें हैं इस मुल्क के अंदर जो दम घुट रहे हैं, वो बोल नहीं सकती. फर्माबरदार हैं वो अच्छी औरतें हैं, वो अच्छी खातून हैं, उनके घर बसे हुए हैं और जो बोलेंगी उनके नहीं घर बसेंगे. सो दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स, विच इज़ द रीज़न वाई दे अग्री ऑन. जब अब्बू कहते हैं नहीं जाना, नहीं पढ़ना, तो ठीक है अब्बू जैसे आपकी मर्ज़ी, या यहाँ शादी करनी, हमने कहा यही करना है तो यही करना है, ठीक है अब्बू जैसे आपकी मर्ज़ी. अब्बू खुश होंगे कि हमारी बेटी बहुत फर्माबरदार है, लेकिन उसका पूरी फ्यूचर उसका ख़राब हो जाएगा. एंड शी विल जस्ट put her dreams in a casket and just bury them somewhere for the sake of that farmabardari. क्या ये जुल्म नहीं है? Obviously. तो अच्छी लड़की वो है जो फर्माबरदार हो, जो उसका बाप कहे, जो उसकी माँ कहे फ़ौरन मान ले. और उसकी अपनी मर्ज़ी क्या हुई? उसकी अपनी मर्ज़ी वो जब ज़्यादा like I feel like my parents were pretty unhappy with me throughout my phase of education. I think they still are pretty unhappy about how away I am, and obviously they miss me and they want to have me around, and I miss them a lot. But it comes down to choosing what is good for you as well, and it is so difficult. It is so difficult to be a good daughter, to know that I love my parents, whether they were nice to me or not at some points of my life, but they're my parents and they've done so much for me anyway. But there's a life ahead of me which I am responsible of, and it's only my duty to do justice to that. ये पाकिस्तानी बच्चों से मैंने अक्सर सुना है कि my parents loved me but they damaged me. इसका मतलब क्या है? I mean, I don't know why talking to other people in Pakistan, like people my age, if you ever like discuss your experiences with this damage, most of the times it's dismissed by saying कि ये तो सबके घर में होता है, ये कौन सा कोई नहीं हुआ. यानी कि सारे पेरेंट्स प्यार करते हैं मगर बच्चों के साथ जुल्म करते हैं. But I think एक डिसिप्लिनिंग वाला जुल्म होता है जो कि थोड़े से बिगड़ी हुए बच्चों को लगता है कि वो हमारे पर जुल्म हो रहा है, हमें ये नहीं करने दिया. But that's sometimes it's disciplining,
and sometimes it is actually oppression. Control and wala oppression. It is like actually terrible for you, and you're like, ब्रेकअप करवा के it's जबरदस्त not the शादी करवाएंगे same. It's not the same. I think a breakup करवा के शादी करवाना वाला वो topic एक different है. Like depends on what the relationship dynamic was. Right, like, I understand that, but sometimes आप they समझ रहे see मेरी बात something ना that कि एक yeah. पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे कंट्रोल एस्टैब्लिश किया कि आप वो करेंगे जो हम चाहते हैं। ये सिर्फ बताइए, माँ बाप की इज्जत कहाँ खत्म होती है, कंट्रोल कहाँ शुरू होता है? ये तो I think क्या लाइन है इसके दरमियान? I think I talked about this somewhat in my article as जी, well. वही आपसे पूछ रहा हूँ कि वो इज्जत और कंट्रोल के अंदर लाइन कहाँ पे है? ये लाइन तो for a lot of parents कभी ख़त्म होती नहीं है. उनको लगता है कि if you are not listening to anything that they said, even if it's like, oh, you're gonna wear pink and not white, or the smallest thing ever, उनके लिए वो भी उनकी इज्जत पे एक मसला बन जाता है. देखिए, मैंने तो ये भी सुना है एक अपने मौलवी दोस्त से कि जो लड़की अपने बाप की नाफरमानी करती है वो तो वाजिबुल कत्ल हो जाती है। I don't even know. I don't even want to say anything on that. Why not? I feel like religion. देखिए जी, मैंने मौलाना साहब से कहा था सर का दिमाग खराब हो गया, बहुत डेंजरस बात कर रहे हैं आप क्या कहेंगे? मतलब वालिद साहब आपको कहें आप कुएं में कूद जाओ और आप मौलाना साहब कहेंगे हाँ बेटी कूद जा. जी वो कहानी जन्नत बता है, देंगे वो किसी उसमें जन्नत है. हाँ जी वो बिल्कुल, हम तो वो मैं क्या बोलूँ जी, हम तो वो आदाब फर्जंदी को फॉलो करते हैं. फरमाबरदारी. It's the फरमाबरदारी that they want from the women because they feel so threatened by what they're capable of. Because if they get educated, if they learn how to be financially independent, they wouldn't need the men in their families as much, which is just a misconception, by the way. Because I feel like no matter how educated or how financially independent a girl gets, needing a man, a brother, a father, a husband is a very crucial part of your life. I don't know how. आपके ख्याल में हर लड़की की ज़िंदगी में बाप, भाई या कोई मर्द होना चाहिए? I feel like it's a support system. अगर आपके पास ना हो, अगर I don't know. I feel like this is gonna get like taken in such a wrong. मेरी बहुत सी फेमिनिस्ट दोस्त हैं जो कि आपके घर को आग लगा देंगे इस बात पे कि क्या मतलब है लड़की की ज़िंदगी में मर्द ज़रूरी है? I used to be like that. Okay. I used to be like that. I was like, as someone who has grown up in a very anti-men way, I was like, मर्द क्या मतलब क्या ज़रूरत है, क्यों भाई को क्यों, मुझे क्यों नहीं, पापा ने कह दिया तो क्या मतलब मैं कर दूँ, और ये वो I fought this a lot. I fought this a lot. I feel like I sometimes still require, I mean, yes, I can take care of myself. I can fight someone if I have to. I can yell at someone. I can stand for myself if I have to. I am strong enough. But when it comes down to me emotionally needing something to fall back on, it would be nice to have my brothers there. Sometimes I'm in a situation, I'm like, oh, it would be so nice if my bhai was here. Like if I see someone else having a healthier relationship with their brothers, I'm like, that's so nice. It must be so comforting that you just have your bhai there. Or your dad is there and he's backing you up and he's supporting you. So, अच्छे मर्द भी होते हैं. कुछ मौकों पे इस मुल्क के अंदर किसी मर्द की ज़रूरत पड़ती है. Doesn't that sort of betray what you're trying to do? I don't think so. I think this is just growth. I think that me growing up, because of my experiences, I developed this extreme decline towards the male population and just like, I cannot accept. All men are dogs. Yes, I would not stand the presence of my brother and my dad. And it was just because of their anger and these things. And I think अभी भी अगर मैं अपने घर वालों के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजार लूँ तो मुझे होता है कि यार it's so nice, just being around women in my hostel, in my university, in my circle. लड़कियाँ इतनी अच्छी, इतना सुकून होता है. घर में मर्द ना हो तो कितना सुकून होता है, कोई शोर नहीं करता. No one is angry at you no one is expecting you to cook them food or do their chores or clean up after them. It's so nice, and I still do heavily believe that. But sometimes you just do need that emotional support of a mehram, of a family member that you just can trust and just rely on a little bit. I realize Saudi Arabia में खासी restrictions हैं ख़वातीन पे in terms of requiring a mehram for even the most basic of things, like opening a bank account. Alhamdulillah, पाकिस्तान में ऐसी restrictions on paper तो नहीं है, शायद on practice हो, मगर
Do you believe that Pakistan is slightly more free for women as compared to Saudi Arabia? I think definitely there is a very huge difference in how women live their days in Saudi and how it is over here. Obviously, I moved back 6 years ago, Right. so I cannot काफी talk changes about. आए हैं अब तो। काफी changes आ गए. License मिल सकते हैं आप लोगों को, You right? can. The abaya is not a restriction anymore, Yes. and a lot has changed. मैंने सुना अब तो बेर भी बिक रही है। I don't know about that. No, actually alcohol shops खुल गई हैं Saudi Arabia में। Okay, that's interesting. Good for them, I Yeah, guess. welcome to the party यार। So, I feel like in Pakistan, obviously, you do have a little bit more freedom in that sense that there are so many possibilities. There's work opportunities, not as many, but there are work opportunities. You can make a life out of yourself. You can figure your things out on your own. Speaking of making a life out of yourself, मेरे एक boomer uncle हैं who has made life out of himself. वो मुझे कहते हैं कि यार बच्चों के मसले इसलिए कि मैंने कुट नहीं पढ़ सकती, और कहते हैं कि मेरे ज़माने में मुझे पोलो स्टिक से मार पड़ती थी और मैं तो कितना सीधा हूँ। So I don't know what to say about that because I don't know if a lot of people would agree to this. But You'd be surprised I how many people would agree कि बच्चों को कुटना जायज़ है। घुटना जायज़ है. हाँ। घुटना जायज़ है because considering the दो accessibility. पैदे उन्हें बूथे तेरे लग पता जाए। I think the internet, the accessibility to knowledge, to accessibility to like different cultures and everything, बच्चों को समझ ही नहीं लगती कि what do they want to be, what do they want to become. They just don't have an idea about anymore. They want to be TikTok influencers, They want to. travel bloggers. They don't want to study anymore. ठीक है सही। Because Mr. Beast के पास इतना पैसा है, देखो वो क्या कर रहा है. कुछ भी नहीं कर रहा, गांधी कुछ भी बचा नहीं रहा है। कर रहा. And they're like, oh, we're gonna be YouTubers, which is fine. ठीक है, great. Pursue your passions and whatever, but like get some education. At least a bachelor's degree is a bare minimum आजकल. What are you gonna do as an adult when you don't? चार जमाता पढ़ जा बन गए इंसान अच्छे। हाँ वही दुआ तो है, होप तो यही है। So I think बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार कुटाई की. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार कुटाई की। But like in a disciplining manner, not in a territorial manner. तो कितना को मारना जायज़ है आपके नज़दीक? I think एक तो थप्पड़ लगा दे, मतलब आपकी ज़ुबान में इतना डर होना चाहिए कि आप बच्चे को मना करें और उसको समझ लग जाए, या आप शुरू से अपने बच्चे की तरबियत इतनी अच्छी करें कि उसको मार कुटाई वाली नौबत ही ना आए. एक दो थप्पड़ लगा दें जायज़ है। अगर यही बात एक हस्बैंड अपनी बीवी के बारे में कहे, No, obviously not. She's not his child. He did not give birth. वो कह रहा है मेरी डिपेंडेंट है, मैं उसको पाल रहा हूँ। Dependent palna. This is the reason why I feel like women need to get educated more. Very right. They need to get education. They need to learn how to earn their own money. They need to make their own portfolios. They need to have their CVs built. मैं सब वही बात कर रही हूँ जो वर्जीनिया वुल्फ ने आज से बहुत साल पहले कहती थी, रूम ऑफ वन जोन, कि मुझे अपना कमरा चाहिए, अपनी इनकम चाहिए, अपनी जगह चाहिए, so I can be independent. ताकि मुझे कोई मारे ना, मुझे कोई जुल्म ना करे, कुछ कहे ना. And I think शायद पाकिस्तान में टाइम आ गया that women need rooms of their own. Yeah, so I've been thinking about this entire dynamic so much कि जितने हमारे इर्द गिर्द इस तरह के केसेस हो रहे हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरों में औरतों को मारा जा रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है, बीवियों को मार के मार दिया जा रहा है, and there is this weird fear in every woman around us. Like, I feel so scared. Sometimes I just watch these news and I'm like, I start crying and I'm like, this is the reason why I kept fighting for what I needed for myself. आप अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, आप अपनी बेटियों को ये नहीं सिखाते कि अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है, अपना पैसा कैसे कमाना है. Obviously, when she gets married, but there are two very, very complicated sides to this. जब उसकी शादी होती है, उसका शौहर obviously, अगर मैं छोटी बहन के और पैसे लगा रही होंगी ना, eventually at some point I will frown a little bit. I'll be like, yeah, what do you mean? Why do I always have to spend on you? Yeah, you're my little sister and I love spoiling you. I just love it. But sometimes I just want, okay, I don't have to do it. Why are you just expecting me to do it for you? I'm not your mother. So I can imagine what a man would feel like if he has to feed his wife and do all of these things. Responsibility उसकी शादी की Responsibility है उसकी, उसको कोड ये बात. लेकिन ये समझ अगर आदमियों के अंदर हो तो हमें और क्या कमी है? If they understand that this is like a privilege that they get the chance to take care of their woman
and they get to feed her, they get to take her out, they get to do nice things for her. It is their responsibility. और उसमें उनको फ़ख्र होना चाहिए कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, बजाय इसके they develop a certain kind of resentment towards the wife or not. Resentment नहीं भी होती तो they just feel like okay, इसने कहाँ जाना है, इसने कहाँ जाना है, मैं इसका खाना बंद कर दूंगा, मैं नहीं दूंगा इसको, घर पे खर्चा नहीं दूंगा. खाना कैसे बंद कर देंगे इंसान का? करते थे होते हैं. I've seen examples of that in my own life where things like that have happened. That's torture. Yeah. Like denial of food and drink, ये torture है. Exactly. Like human rights conventions apply. किसी इंसान के ऊपर हम नहीं रोक सकते. Exactly why I feel like कि अगर एक औरत के पास ये सलाहियत हो ना कि उसे पता हो कि यार ठीक है, I expected something different from this and it's not turning out to be that way. I have an option to just step out and do my own work. But again, not everyone has the privilege. They were never given the education. They were never taught how to go out and survive on their own without having a man by their side. And they just feel scared and they're like, ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने और कहाँ जाना है. और कहाँ जाना है? और कहाँ जाना है. But then we also have cases of very well-educated women, very well-earning, अच्छी अपने professionally stable औरतें जो कि फिर भी अपने घरों में इस तशद्दुद का निशाना हो रही होती हैं. उनको भी खाना नहीं मिल रहा? खाना तो मिल रहा होता है, but I think there is a different kind of abuse that goes down for them, like physical abuse, physical verbal violence, abuse, verbal abuse, psychological torture, psychological torture as well. So yes, women are not safe. They don't have a guarantee of being safe, whether they're educated or not, whether they're financially independent or not. There is no guarantee, but it does give you some leverage. It gives you an option that if things don't turn out as good as we wish that they would have, you can try and fight and get away. मेरी आंटी फ्रेंड है, वो कहती है अगर बॉयफ्रेंड ने कोई चमाट मारी तो मैं उसको 3 साल की जेल भिजवा दूंगी, मगर बच्चे को एक आध चढ़ मार देना जो वो सीधी बात नहीं कर रहा जायज़ है. Agree. Why is violence on one side absolutely unacceptable and the other side condoned? ये इसलिए खराब है क्योंकि चमाट पड़ी होती है ना, बच्चों में सीधा हो रहा था आज. लेकिन देखिए फिर वही बात है ना, एक आपकी औलाद है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी तरबियत करना आपकी. देखिए जी, हमारे ज़माने में तो मोहल्ले के अंदर भी कोई बड़ा बुजुर्ग होता था, वो एम आते जाते साथे सर पे धप्पे धुप्पे मार देता, क्या तुम हरकतें कर रहे हो? That is disciplining. But why do you need to discipline your wife? She is not your child. I don't want to discipline anyone. मेरे ख्याल में किसी को भी धप्पे मारना जायज़ नहीं है, ना लड़की को ना लड़के को, ना किसी को नहीं. Okay, I think पता नहीं. So you think it's okay to have violence against children? Not violence. I'm not saying that. You realize violence की definition ये भी है, अगर आपसे किसी से कोई loud voice में चीख के बात करे, that too is considered violence. Domestic abuse के अंदर ये भी आता है, अगर husband आपसे बार-बार चीख के बात करता है, that is considered violence और आप उसे report कर सकती हैं. बच्चे के साथ ये violence नहीं है. अच्छा, I have been like You're a growing victim up. of violence. I am Yes, a victim you are. of violence. My dad used to beat the shit out of me. He used to beat the shit out of my brothers. I'm sorry. So I saw a lot of violence growing up, and I just feel like there's a difference between violence and disciplining. Okay. I don't know. It's just my understanding. या तो disciplining ये हो कि आपने बच्चे से अपने बचपन से अपने बच्चे की तरबियत इस तरह की हो कि वो बहुत अच्छा हो और उसको आपको उसकी सिर्फ आप बैठ के conversation करें. मतलब for me an ideal scenario would be that my kid comes to me and they're like, you know, blah 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 blah, and if it's something that I disagree with, I sit them down and we have a conversation about it. Absolutely. And we talk about it and I hear them out and they hear me out and we come to a conclusion. And जहाँ वो conversation खत्म हो गई और अब बच्चा ने आपकी बात नहीं मानी, आपसे 2 चमाट मार देंगे. No, I'll be like, okay, fine, just go experience it, come back and then we will talk again. So in your parenting style, you would believe कि बच्चे को कुटापा चाटना जो है वो ना हो. वो गलत है. Yeah. 83% of children in Pakistan, ये UN की report है, have suffered some form of physical or mental abuse at the hands of their parents. One or more parents. या अम्मी ने या अब्बू ने कोई ऐसी बात की जिसे मैं psychologically taught. 83% of children report करते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है. क्या हमारी nation traumatized है? I think हमें एक तरीका सिखाया गया
कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिल्कुल ठीक है। तो वो एक चीज़ आगे नहीं कैरी नहीं, हमें नया ऑन तरीका सिखाया गया। अभी हमें पंजाब की अम्मी ने बताया मार नहीं प्यार। which is really great. I hate when teachers यार आई वाज शॉक्ड, लाइक मुझे तो खबर हुई तो स्कूलों में मारना बंद कर दिया। मैंने कहा मारना शुरू कब किया था यार? बहुत मार पड़ती थी स्कूल यस, में, खबरें आती हैं मार मार के जान से लाठियों मार से देते हैं मार के यार वो मदरसों में। यस, ओह माय गॉड, हॉरिफाइंग। Yeah. हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर यार? आप बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं यहाँ पे? I think people just have so much frustration. They just have so much unresolved shit within फ्रस्ट्रेशन themselves. दीवार पे जाके मुक्के मार दे, अपना हाथ तोड़ ले यार। They need more rage rooms, I think, to just Horrible idea. process their own Rage rooms emotions. themselves psychologically कभी research कीजिएगा उन पे, they're a horrible idea. I did not know that. They make you used to violence, and the next time you feel rage, आपका पहला instinct नहीं होगा baseball bat पकड़ूं कोई चीज तोड़ दूं, because that will be good cathartic. So rage rooms are a bad idea. Thank you for educating me. Did not know that. Research हो चुकी है इस पे. People recommend anger management के अंदर यही कहते हैं गुस्सा बहुत सता है, sit down and write a letter. Put your feelings out in the letter, but don't send it, burn it. That's a very American way. यहाँ पे किसको लिखना ना आता हो फिर आप क्या करें? If you don't know how to रब से write. बात करें, दुआ करें, जो That's आपके nice, पिछले yeah. 5000 साल से लोग कर रहे हैं। जब गुरु नानक को दुख हुआ था क्या किया था? रब से बात की थी। लेकिन who knows how to manage their emotions that nicely anymore? आजकल के दौर में नहीं यार, हमारा इनिशियल रिस्पॉन्स ही है कि असॉल्ट कर दो, चीख पड़ो, उतो दिया आना, Lash वो जो out, yeah. हमारा एक ख्याल में जो पंजाबी कल्चर है यहाँ पे ब्रवाडो और ईगो का, शायद वो ब्रवाडो और ईगो हम बच्चों पे भी निकालते हैं। अगर बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसको फंड छोड़ूंगा। अगर लड़की ने वहाँ शादी नहीं की, तुमने फुप्पो की बेटी से शादी करनी है वरना तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। And it's like as sad as it is, we can laugh about it, but it is the reality लोग for so वाकई इस many बात पे कत्ल people. होते हैं यार। Yeah. I feel like कि हमारी जो पिछली जनरेशन्स हैं उनको एक तरीका सिखा के वही नॉर्मलाइज किया हुआ है कि बस यही तरीका है, इसमें कुछ गलत नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें मार दूँ, तुम्हारा काम है तुम उफ ना करो। एंड दिस इज़ लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं तुम्हें मार के मार दूँ, तुम उफ ना करो। हाउ? व्हाई? एंड स्पेशली व्हेन इट्स लाइक जस्ट सच एन अनरीजनेबल reasoning behind their behavior, and they're like, just had a bad day at work and घर आके बच्चों को पीट देता हूँ। What? Just because you're having a bad day, you're यानी कि gonna make वापस आपका sure. डेली का रेज रूम है। Yeah. तो फिर सारी बात है, रेज रूम के ऑब्जेक्ट्स आप लोग हो जाएंगे। यार physical violence against children, I really cannot stand for it in any measure. Like ठीक है, people may give the child a little spank here and there, मगर यार ये कोई इसका कोई मेजर नहीं है कि what is, बच्चा ही बता सकता है मेरे साथ वायलेंस हुई कि नहीं हुई। And frankly in your case definitely violence थी, it was abuse. What can be done about that anyway? You survived. And You're a I survivor. made art about it, so it's Yes. fine. You're an absolute survivor, which is why you're here. If I hadn't seen your art and known what you'd survived, हमें पाकिस्तान में अच्छे इंसान चाहिए, obedient इंसान। Obedient इंसान अच्छा कब होता है? Automaton, मैं जो कहूँ मान जाओ, जो मैं कह रहा हूँ सही है। अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी अकल यूज़ कर सके। अच्छा इंसान वो होता है जो कि थोड़ी सी तालीम रखता हो। अच्छा इंसान वो होता है जो और इंसानों की हेल्प करे। I completely agree with you, and which is why I think that anyone who's like obedient and they're like the perfect person who never gets on anyone's nerves is not actually a nice person. They're just a people pleaser, and maybe they don't even realize that, but they just have been trained to function in a certain way where they feel like this is the norm. कि बस ठीक है यही है। अच्छा बॉस ने ये कह दिया मैंने कर दिया, बॉस ने कह दिया तुम रात के 2 बजे तक काम करोगे, तुम रात के 2 बजे तक काम करोगे। जी, you're right. एक हकायत भी है कि उस आदमी से डरो जिसको सब लोग अच्छा कहें। So a person that does not respect themselves or has a voice or any opinion of their own is not a nice person. It's a victim. It's just a victim. They're not a bad person. They're तो just आप a चाहेंगे victim. your ideal person to have a voice, their opinion, their own ideas. Yeah. आपको पाकिस्तान में कितने लोग मिले जिनके अपनी वॉइसेस और अपने आइडियाज होते हैं? It lacks so badly. Like I thought that, especially in the art community, there would be a little bit more of that. But even the art community is so obedient. They will listen to what the curators are saying. They will listen to what their audience is saying, and they will just abide by whatever the expectations are. They don't, because having a voice and having an opinion, it's a bit risky in this economy. मैं आपको बता देता हूँ, मेरी नानी अम्मा का ओपिनियन है कि ये जो मॉडर्न पेरेंटिंग है ना, उसके बाद सारे मसले खड़े हुए हैं। उनके ख्याल में जिस तरह उनके ज़माने में पेरेंटिंग होती थी, दैट वाज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट?
उनके ज़माने की पेरेंटिंग मतलब मार कुटाई, बेलने से मार पड़ रही है और ये सारी चीज़ें। जी फ्लाइंग जूते आया करते थे। फ्लाइंग जूते भी आते हाँ, वो ड्रोन अटैक्स की तरह ना वो एंगल बना के जूता टी ढास सर पे आके बजता था। हैं। डिड यू एवर गेट हिट? मुझे पोलो स्टिक से, जूतों से, बेल्टों से, किताबें उठा के सर पे मारी दी गई। आई मीन लाइक आंसू मेरे टपक रहे होते थे मेरे होमवर्क के ऊपर जब मैं काम कर रहा होता था तो मार पड़ी होती थी साथ में। सो यस, मैं तो यार ऐसा विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज टिन हो गई थी मेरी चाइल्ड अब्यूज I'm so sorry about that. पार्ट ऑफ लाइफ। मैं तो उसको वेव ऑफ कर चुका हूँ, 12 साल थेरेपी में गुजार दिए थे इस चक्कर में। You see, I went to therapy. I went to therapy, and okay, so should I answer the question first, or should I tell you my experience? Go ahead, stories, Okay. it's conversation, no? बाद में आ जाएंगे क्वेश्चन पे दोबारा। So while I was doing my thesis project, while I started making my independent work, there were some topics, there were some things that kept coming back to me. I never intended on making work that was so personal. I mean, why would anyone intentionally want to make work that is less sellable or less admirable or is a bit difficult for even me to make? मैं अक्सर काम बना रही होती हूँ and I just sit back and I get goosebumps all over my body and I just start crying. And I just sit there and I just look at my work and I just keep crying. Because for me, my work is an absolute catharsis. I am talking about things that I had probably forgotten at some point, things that were still there, they needed to come out in a certain way. Were they in your subconscious? Are they your Yes, traumas? yes, my subconscious. So, अब जब मैं काम बनाना शुरू मैंने अपना independent किया while I was in university, so these things were coming back again and again, things that I experienced secondhand or firsthand through my family, their trauma, their borrowed trauma as well. अम्मी ने जो experience किया मैं वो भी अपने अंदर लेके फिर रही थी because I was the eldest daughter and she used to vent out a lot to me. You were the eldest daughter. Yeah. Are you familiar with the eldest daughter syndrome? Yeah, obviously, I'm a living perfect example of the eldest daughter syndrome. So these things, I felt like whatever she experienced, I was experiencing those things. And मैंने वो loss कर लिया हुआ है, मैंने वो चीज़ experience कर ली जो अम्मी ने की थी. So living with all of these things, I could not talk about anything else but that, no matter how hard I tried. So at one point, it got so bad that there was this period where for a year, anytime I would even take a nap or fall asleep slightly, I would get into a state of sleep paralysis. I was getting hallucinations. God, yeah, that's deep trauma. It got so bad that I would just be so exhausted and I would be like, I just want to take a nap. I just want to sleep for a while. I'm not able to. I used to call my ammi. I would be like, I would be like, can you please like pray and send something to me? Okay, why is this happening? I'm so scared. It's so scary. It doesn't feel good. I'm seeing things. And then I was suggested that I go to therapy. I did go for a while, got to make peace with a lot of things. और उसके बाद I called my mummy and I cried so much. I was like, why did you do this? Why did you do this? You did this and you don't even remember it. That's the saddest part. She was like, I don't remember that. And I'm like, यही तो सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं और आपको याद नहीं है और मेरे साथ वो अभी तक फिर रही हैं. And I'm not able to forget them and I'm living them every single day, every single night. I'm living all of these things. And then she was like apologizing to me. I was like, it's okay. You know what? I love you. It wasn't your fault. And I forgive you. But I just needed you to know that this is what I'm experiencing because of everything that happened. Then after some time, there was this exhibition that I did in Karachi with Art Lane Gallery. It was on Father's Day about fathers. And I submitted my work about fathers. मैंने उनको काफ़ी लंबी descriptions लिख के भेजी and I was like, I'm sorry, this is not the typical work that you would expect about a father, but this is what I'm talking about. I gave them a long description of the work that I wrote an article on as well. And it got accepted. I sent my work to Karachi. I called my dad. I was like, your paintings are in Karachi right now. And he's like, yeah, वो तुमने मुझे cartoon बनाया हुआ है और तुमने वो भेज दिए वहाँ पे. फिर मैंने ना उनको, he was at work. So I video called him and I explained everything to him. I was like, you know what I'm talking about here? I broke down the little symbolisms. I showed him, this is me, this is you. यहाँ पे ये हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है और ये वो. And I remember that conversation where both of us, we just talked. Like he was majorly just listening, he was speechless. And I was like, we were both crying. And we shared this moment where
He understood my work a little bit more. My mom, during the time of my thesis, got really offended by the way I was depicting my family. It was animal figures, it was nude bodies. It was not something that obviously she understood. And she felt like I was putting on our experiences on display. वो सारी चीज़ें मैं डिस्प्ले पे लगा रही थी, दुनिया के सामने तमाशा बना रही थी. I was like, I'm sorry that you feel this way. Then no one from my family came on my thesis. आपको वो देखने नहीं आया? And I was really sad. I cried a lot. I was like, I wish they were here. I'm sorry. ये ऐसा होना नहीं चाहिए. But they just did not come. But I showed them on a video call anyway. But they did not really give too much shits about it. My mom was really mad at me at that time. But उसके बाद she was fine. She was like, it's okay, तुम गंदी चीज़ें पेंट करती हो. I was like, it's okay. It's art. Art गंदा नहीं होता. So while I use my painting as a way to process these feelings for myself, I feel like I also use them as a way to make my parents understand a lot. Do they understand? क्या पेरेंट्स वाकई समझते हैं? They do somewhat. Generally, मैं पेरेंट्स आपके पेरेंट्स नहीं, मगर on the whole आपने क्या एक्सपीरियंस किया? क्या पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों? They don't. They just do not want to listen. I feel like if parents tried listening to their kids a little bit, they would understand so much about themselves, about their parenting style, about the things that they personally need to work on. I made my mother aware of what anxiety is, of what depression is, of what therapy is, and I counseled her at points, which was not my duty, but obviously eldest daughter syndrome, I had to be the counselor as well. I had to give her some therapy to talk her into understanding things about herself. वो देखिए जी, आजकल के ज़माने में I know mothers जो अपनी बेटियों से तंग हैं, and I know fathers who despair of their sons. माओ ने बेटियों पे केस किए हुए, बेटियों ने बापों पे केस किए हुए. क्या अब यही ज़िंदगी है? Like family relationships, once people turn 18, become broken and shattered. I think majorly, yes. Majorly, if a child has had a bad experience with their parents, they do grow इतना दूर कि वो वापस आने का उनको रास्ता नहीं मिलता. And they just start seeing them as not their parents, not even human beings. तो वो उनको at some Dehumanize कर देते हैं. Dehumanize कर देते हैं. Which is again something that I talk about in my art to some extent, that I dehumanize them and then I Change them humanize into them something again. else. Yeah. So it is a process that if you care enough, you would go through. Because yes, things can be so terrible, and sometimes things are so bad that you genuinely do not want to mend anything, and that's your personal choice. There's nothing wrong with that. अगर आप पाकिस्तान के पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स को मैसेज दे सकती, क्या कहती हैं उनसे? Listen to your kids. Even if you feel like they're being annoying or they're just like complaining and being too sensitive, listen to them without the prejudice. अपना जो पहले एक दिमागी ओपिनियन जो आप पहले से डेवलप कर लेते हैं उसको साइड पर रख के प्लीज़ अपने बच्चों की बात सुनें. हाँ. और उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपकी ही औलाद है और वो जो चीज़ें समझ रहे हैं वो आपसे ही रिलेटेड है और उनकी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ पर डिपेंड करती है. So just listening and talking to them, giving them the space to come and talk to you is such a big blessing if you don't want to end up alone in your elderly ages, because वो आप उस चीज़ को it's inevitable. If you are a bad parent, it is inevitable that Inevitable. your kids are going to leave you. They are going to leave you as soon as they can. They will leave, and I do not want that for any parent. मगर some parents want their kids to leave. मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चों को बस बस ठीक है, independence. फिर उनके बच्चे चले जाएं, उनके बच्चे भी खुश, वो भी खुश. I think that would be like perfect. Okay, मगर अगर बच्चे नहीं छोड़ते फिर? ये बच्चे नहीं छोड़ते. हाँ, 40 साल को हो गया अभी तक मेरे घर में रह रहे हैं, जाए अपना घर ढूंढे कहीं पे. I think that's a different problem. I haven't reached that stage I yet, see, so I I wouldn't see. get to really say much about that. मेरे तो घर वाले कहते हैं घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ. So it's different. ये बताइए क्या पैसा होना इस बात की गारंटी है कि आपकी चाइल्डहुड अच्छी होगी? No. कुल है जी, आप लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ेंगी, आप अगर लड़का है तो एच कॉलेज में जाएंगे, universities, education, all set, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, isn't that good childhood? Not at all. I don't feel like money is a guarantee for a good life at any stage. I mean, yes, it can give you some comfort, it can give you some privileges, but it does not guarantee happiness or a good life.
it just makes things a bit easier financially. आपके पास वो मसला नहीं था, but I've seen गरीबों के बच्चे इतने खुश होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनको दिन के आखिर में उनके साथ बैठ के उनके हंस के बात कर रहे होते हैं, या हंसते हुए खाना खा रहे होते हैं, या खाना खाते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हैं. There are conversations that are happening in a नरम लहजा. I think that's happiness where जो कि आपने you're उमरा के घर में नहीं देखा. शायद होता भी है कुछ घरों में, but it does not depend on the money. It does not depend on the money. पैसे कोई ताल्लुक नहीं है आपके पैसे का बचपन ताल्लुक से. नहीं है. यार मगर मेरे ख्याल से अगर अब पैसा है तो आप बच्चे को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छी ट्यूशन, अच्छे कोर्सेज, राइडिंग स्कूल, isn't that a good childhood? Swimming lessons, galas. But is that all that a kid needs from you? I do not know. What does a kid need from a parent? A kid needs the warmth and closure from a parent. They need the safety from the parent most of all. तो वो एक पेरेंट कैसे दे अपने बच्चे को? I think just by being present, just by being kind and patient. Half of parenting is showing up. Yeah, half of parenting is showing up. It is showing up. But not just showing up, being actually present. Being present when they're talking to you. Being present when they ask you that they need a certain something. I know examples where the kids would go to their parents and they would be absolutely depressed and they'd be like, Ammi, I'm not feeling good. And she'd be like, oh, it's all because of the phone. I'm going to be like, नमाज पढ़ो. नमाज पढ़ लो, कुछ भी नहीं होता. So, and things like that don't really end well. The kid might end up hurting themselves, might end up not feeling safe enough to come and tell you something, because if they found the courage to come and open up to you about something and you're just dismissing it, how is that healthy in any way? Not at all. I don't think it's healthy at all. कोई खास वजह कि मतलब बच्चों से ये तो पूछ लेते हैं कि क्या ग्रेड मिला, मगर ये नहीं पूछते क्या तुम खुश भी हो. Where parents ask about grades and not about if you're happy or not. For them, happiness is if the kid gets a good education, पढ़ लें अच्छा, अच्छे नंबर आ जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी चले जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, तो उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी. And their worry of having that stable life for their kid is bigger than their worry of whether the kid is actually happy or not, whether they're mentally okay or not, if they're going through something. They're like, नहीं, तुम्हारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, पढ़ाई करो, जॉब पे लगो, ये सारी चीज़ें करो, because that's their idea of an ideal life, of a perfect life, and their version of knowing how the kid is going to have a safe future. मेरा एक एस्टोनियन फ्रेंड है, उसने कोई 40 साल बाद मुझे कन्फेशन दिया था कि his father never told him that he loved him, मगर उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया था. क्या पैसा ही पेरेंट्स का प्यार है? अच्छा, I do not have any experience with anything that you're talking about right now. मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं देते हैं. For 6 years I've been entirely financially on my What are own. you doing? Entirely. University fee, hostel fee, food, art supplies, everything. It's just me. Oh my God, So- यार, I'm so impressed. That is absolutely awesome. Yeah. So I wouldn't know कि पैसा प्यार है या नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनका कभी-कभी कॉल कर लेना भी प्यार है. And for me, I think I'm happy with that as well. नहीं जी, अब मैं ज़रा कुछ तल्ख हकीकतों को डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ. Would you agree कि पाकिस्तान के अंदर men and women face a different set of dangers? Obviously. एक ख़तरा मुझे है, अगर मैं सड़क पे जाऊँ मैं लुट सकता हूँ, कोई मुझे चमाट मार के भाग सकता है, गोली मार के भाग सकता है. एक ख़तरा आपको है जो कि ये सब लुटना, चमाट खाना, गोली खाना. उसके अलावा there are certain other dangers that I do not face but you do. मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि हम लड़कियों पे ज़्यादा नज़र इसलिए रखते हैं बिकॉज दे फेस ग्रेटर डेंजर, या हम लड़कियों में ज़्यादा कंट्रोल इसलिए रखते हैं कि उसकी लोकेशन चेक करो, कहाँ पे है, लोकेशन ऑन रखो, किससे मिलने जा रही हो, क्या करने जा रही हो, बिकॉज यू फेस मोर डेंजर. डू यू एग्री विद दैट? बेटियों के बारे में फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है. अच्छी बात है कि आपको फ़िक्र है और आपको ये भी फ़िक्र है कि बाहर क्या हो रहा है. बट रेज योर सन्स टू बी बेटर सोशल बीइंग्स, कि आपको पता हो कि अगर हमारी औलाद अच्छी है, अगर हमारे बेटे दूसरी औरतों की इज़्ज़त करते हैं तो हमारी औरतों की भी इज़्ज़त होगी. यू कैन हैव दैट एक्सपेक्टेशन, यू कैन हैव दैट पीस ऑफ माइंड कि आई रेज्ड गुड बॉयज़, सो आई होप दैट देयर आर अदर गुड बॉयज़ आउट देयर हू आर. आई होप सो टू. पाकिस्तान में लड़की की गलती पूरे ख़ानदान का मसला बन जाती है, लड़के की गलती उसका अपना ज़ाती फेल होता है. क्या डायकोटमी है? जब कोई लड़की गलती करती है तो पूरा ख़ानदान जंप कर जाता है कि यार हम फिक्स करते हैं. Obviously, it's the misogyny. It's the mindset that जब एक औरत के हकूक़ की बात आती है तो सब खामोश होते हैं, लेकिन जब उस पे
हक जताने की बात आती बिल्कुल। है तो सारे मर्द बन जाते हैं। देखिए जी, वली के बगैर तो निकाह नहीं हो सकता। कोर्ट मैरिज आप जाके कर सकते हैं, मगर वेलकम टू द पार्टी यहाँ पे तो वो डांस शुरू कर दे, लड़की का वली कौन है जी, कि इसे गिव अवे कौन कर रहा है। स्टिल वो आके एक प्रॉपर्टी के लॉज हमें लगाए हुए। हाउ डू यू सी दोज? आर यू स्टिल योर फादर्स प्रॉपर्टी? I think that is a very difficult thing to break free from, unless you decide to entirely cut your family off in a way, or you're like, you know what, kata ताल्लुक ही कर दिया. I just don't want to be a part of them. I don't want to be invited to their events. I don't want to be invited to any funerals. Allah maaf करे. And which is a very scary thing, and I wouldn't want that for क्यों नहीं myself. जी, पंजाबी में से बड़ा अच्छा वर्ड है, आज तो जून मरण खत्म। I hate that. यार लव इट। अच्छा ठीक है, ग्रेट, वेरी इंडिपेंडेंट। No, I don't really. Like, मैं कहा शुक्र अब तेरे बाप की चली से मिलाना पड़ेगा। यस, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग पार्टी। but I feel like showing up at difficult times is pretty important, and वो तो हमारे कल्चर का है। जब दुश्मन का भी कोई डेथ हो, यू गो व्हेन यू नो, आप शो करते हैं कि हाँ यार इस गम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुश्मनी अपनी जगह, आज के दिन के लिए दुश्मनी खत्म। अब्बू की प्रॉपर्टी वाली अगर बात की जाए तो I just really hate that term. I don't want to be any man's property. I am not my dad's property. I'm not my brother's property. I wouldn't be my husband's देखिए जी, husband's पाकिस्तान में you're property either either. husband's property or your father's property. No. Yes. In Pakistan, yes. But वेलकम टू द पार्टी। आपके आईडी कार्ड पे शौहर का नाम, खामिद का नाम, बाप का नाम। अब मेरे ख्याल में कोई आके कुछ हुआ है ऐसा कि यू कैन हैव इट इन योर फादर्स नेम, या शौहर का नाम लिखवाना नहीं लाजिम नहीं है शादी के बाद, मगर रौले पड़े हुए नादरा के अंदर है कि आप ये लड़की है तो किसकी प्रॉपर्टी है, इसका एफर्सी कहाँ पे, किस फैमिली से जुड़ती which है। is really pathetic if you think about it. I do think about it and think it's pathetic. It is so pathetic. Like, why don't we do the same thing for men? Yes, we should. Why don't हाँ। men walk around with their wife's बीवी का last नाम name? Yeah. होना चाहिए आईडी कार्ड पे, बीवी का नाम Yeah. या बीवियों का नाम। हाँ, अगर 4-5 लिखने चाहिए। अगर वो लिखेंगे सब सेक्शन एक गर्लफ्रेंड्स का नाम, 3 और होनी चाहिए। वो होना चाहिए ना यार, पता लगे आपकी औकात क्या है। सर Yeah. आपका आईडी कार्ड शीटें लग रही है अटेंडेंट के साथ। 17 बीवी थी आपके पहले और ये 4 इस वक्त है। बट सीरियसली आई मीन कल्चरली डू पीपल स्टिल आस्क यू जी कि आपके वालिद कौन है, आपके शौहर कौन है, या आपके साथ भाई नहीं आए इस काम के लिए, आपने घर रेंट करना है, भाई किधर हैं आपके? Personally, not so much. नॉट सो मच, बट Not so much. सुना हुआ है आपने कि ख्वातीन को अकेले को बिजनेस स्टार्ट करना हो, अकेले को बैंक अकाउंट खुलवाना हो, अकेले को घर रेंट करना हो, पहला सवाल ये होता है आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? Yeah. जी बैंड बजाने के। Yeah, which is just pathetic. I think Pakistani When do you society think this will overall- change? ये कब बदलेगा? God knows. God knows. God knows. I don't know. कोई टाइमलाइन मैं 10 साल में देखती हूँ कि जरा मैं 10 साल में पाकिस्तान को शायद थोड़ा सा और पीछे जाता हुआ देखती हूँ, क्योंकि आई फील लाइक कि द प्रोग्रेस दैट वी मेक एज अ नेशन, एज अ फीमेल नेशन, हम थोड़ी सी प्रोग्रेस करते हैं, एंड एज सून एज इट गेट्स रिमार्केबली विजिबल देयर लाइक पुश देम बैक हार्डर, और थोड़ा सा और जुल्म लेकर आओ, एंड देन देयर जस्ट पुश बैक अ लिटिल बिट, एंड देन यू हैव टू you're walking at the pace of a turtle, but it is still very important that you keep walking with the hopes that you will see a better tomorrow at some point. Like, I don't know if there's a realistic or any hypothetical timeline to this. मौलवी नहीं होने देंगे, मौलवी नहीं होने देंगे। अभी नहीं होने देंगे। लड़की को शादी, तलाक, लिव इन, लिव आउट, लिव अलोन, इन सब के लिए ख़ानदान से एक इजाज़त चाहिए होती है। शादी की इजाज़त चाहिए, तलाक के लिए पूछना पड़ेगा कि अब्बा जी मैं तलाक लेके वापस आ जाऊँ। हमारी नारी में कोई शक्ति नहीं है, हमारी जो औरत है अपने डिसीजन नहीं ले सकती। डिसीजंस ले सकती है, लेकिन हमने उसको बेवकूफ़ समझा हुआ है। वी थिंक दैट कि कम अकल है, इसको थोड़ा कम पता है, वी नो व्हाट्स बेटर फॉर जी जी, हम वो औरत नाकसुल अकल है। जी, सो गो ऑन प्लीज। So they think that because they're the men, or sometimes it's even the woman of the family, the matriarch most of the times, which is sort of misogynist as well in their presence. एक बार आपकी दादी इस तरह की होती हैं, कोई कि मुझे ज़्यादा बेहतर पता है आपके लिए क्या है, and it's just the idea of knowing कि because she's submissive, because वो फरमाबरदार है, वो हमारी हर बात में हाँ मिलाती है, तो शायद हमें उसके लिए बेहतर पता है कि उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी,
क्या उसको इस शादी में रहना चाहिए, शायद उसको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वी नो बेटर. So it's again just about that. मगर ये फरमा बरदारी की जो कैटेगरी है लिटरली विश लिस्ट के अंदर आती है. जब कोई लड़की सास ढूंढ रही होती है, सोनी होवे, सुगुड़ होवे, तो फरमा बरदार होवे. लाइक ये थर्ड कैटेगरी है ही फरमा बरदारी की, ओबीडियंट. But why? Like, why do you want a... बिकॉज nobody wants rebellion. I mean मेरे ख्याल में अगर आपको ओबीडियंट हस्बैंड मिल जाए, would you prefer that to a rebellious husband? But that's not the opposite of being... Obedient. Yeah. नहीं, obedient का opposite क्या होगा? Disobedient? I mean मैं दूसरा देख रहा हूँ, rebellious. I would say it's just opinionated, not rebellious. You can have opinions, you can have the ability to sit, like, confront the male around you Right. and just put your opinion forward and have the capacity to intellectually back up what you're saying and just have like a conversation that is getting to some point. It's not like rebellion. Very nice. I quite agree with what you. I completely agree with what you're saying. But how many women in Zilla Jung would have the ability to do exactly what you've said? My Rationally put their opinion forward based on logical arguments to come to a finite conclusion which is accurate. बहुत कम लोगों से हो पाएगा. मेरी अम्मी का ददयाल झंग से. So let me ask you this: how many women do you dare expect to do that? None. And then rationally हम क्या कर सकते हैं? What can we tell our women? What can we tell our young women कि भी आगे देख क्या करें, क्या सोचें? I think when I think about this entire dynamic on a larger scale, it does scare me a lot. It scares me a lot because I think about the women who are living in Jhang. मैं अपनी वहाँ पे जो मेरी कोई family example ले ले. है, मैं उनसे जब मिलती हूँ, ज़रा तलवारियाँ ले लें, अभी doesn't matter. Chuck Yeah. number 35, whatever. So when I think about those women, I remind myself that the brain and the thinking capacity that I have right now is a privilege that I had to fight a lot for. If a woman that never had that privilege to actually step outside or experience things or get educated at any level, 5वीं जमात नहीं पढ़ी हुई है जिसने, उसको क्या पता होगा कि उसने अपनी बात कैसे करनी है, या उसने उसका क्या ओपिनियन है. उसने किताबें नहीं पढ़ी, उसको क्या पता है उसका क्या ओपिनियन है. उसने न्यूज़ नहीं देखी, उसने अखबार नहीं पढ़ी, उसने अपने मोहल्ले की औरतों से उस तरीके से डिस्कशंस नहीं, कुछ भी नहीं किया. तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सौर से? वो तो मार खाते रहेंगे सारी उससे तो उम्र. कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, which is really sad. But I think again that's the point of depriving women from education and community and depriving them of having any social experiences at all. हमारे यहाँ पे तो औरतों की अपने मोहल्ले में भी उस तरीके से दोस्तियाँ तंग करती हैं शौहरों को कि क्यों इतना, तुम्हें क्या ज़रूरत है, घर पर रहो, बच्चों को संभालो, खाना बनाओ. Really? Yeah. ये कल्चर इम्प्लीमेंट है कि अगर लड़की के मोहल्ले में दोस्तियाँ हैं तो वो तंग करती हैं शौहर वो को. भी करती है. क्यों? Because obviously when you talk to people, you learn things. And if you learn things, you learn what is right for you, what is wrong. आपने क्या लड़कियों को घर पे बंद कर देना है ऐसा कि वो आपके अलावा किसी और को ना पहचाने? Which is the ideal scenario. आइडियल है ये आपका. Ideal for a man. Like if your wife has friends who जिनके शौहर उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ special gestures करते हैं or they take care of them, and you don't do that for your wife, and your wife is meeting these friends, and they're telling her about all these things that their husbands are planning for them or doing for them, and your wife is getting some realization कि अच्छा ठीक है, this is not the norm that I'm living. Right. I thought this was normal, but it's actually not. It's different for these girls. So why is it not like that for me? So you start questioning, you start getting some awareness. ये बात आपने सही की. कल मैं अपनी बीवी को तखाने बंद कर देता हूँ, बहुत हो गया यार. वो दोस्तों से बात सुन रही थी, उसको भी शनेल की परफ्यूम चाहिए होती है. Yeah. क्या बकवास है यार. How do you keep people? उनके पास फोन नहीं है, इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं है इन खवातीन के पास. Like how do you prevent them from connecting via social media? Not everyone has. Of course, अभी रमजान की बात कर रहे थे. Yeah. So they don't have a phone. They actually don't have that connection. अगर उनके पास भी हो, पर हम उनको दिखाएं कि अच्छा ठीक है, शहर की ज़िंदगी कैसी होती है, या यहाँ पे औरतों को उनके शौहर किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वो भी शोर डालना शुरू हो जाएंगी. They will be like नहीं, हमें भी यही चाहिए. Like why do you never take me on a date? Why do you know? It's like it's our anniversary. What did you plan for me? So you start getting awareness and you start questioning things, which they don't want you to do that actually. देखिए जो UN Women की report, I'll give you the hard data. Women spend 20% of the time at home during household chores. Men spend 2% of their time doing household chores. So तकरीबन 10 गुना काम करना पड़ता है लड़कियों को compared to the boys
हाउस होल्ड लेबर के अंदर, क्या ये फेयर है? Obviously not. And especially in scenarios where the woman is also earning as well, and she has a job, ठीक. and she's still expected to come back, cook, take care of the children, do the chores, do the dishes, do the laundry, do all of that, earn as well. She's working probably like 15 plus hours in a day. More than that. She has to put the kids to sleep as well. She has to babysit the husband as well. She has to make sure that he's emotionally regulated. बेबीसिट द हस्बैंड, क्या मतलब इस बात का? I think most of the husbands these days do need a lot of babysitting. They're not babies. They're not, but they were raised like babies. Oh God. So you're still babysitting them. Oh तौबा. अच्छा ठीक है. मेरा शोना है, मेरा बोलना ठीक. आप उनको देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, oh he's angry now, I have to do something to make him not angry. Oh he's feeling upset, I have to do something to fix that. He doesn't like this, so I should not do that. He likes this, so I should do that. So you're just revolving your consciousness around how to keep him emotionally regulated, how to make sure that he's feeling okay, he's not upset, you don't do things that make him upset. That is babysitting. You do that for a baby. But men, on the other hand, don't even realize अगर उनकी बीवी के सामने रो भी रही होगी ना, they'll be like, ये तुम्हारा रोज का है, तुम फिर शुरू हो गई हो, दूसरी तरफ मुड़ के सो जाएंगे. Because for them, this is not a responsibility, but women as by nature are. I'm guessing at that point the relationship is pretty much over. If you can't care about a human being emotionally distraught, अब कर क्या उस relationship में? A lot of men don't have the empathy in them to actually see that their wife is a human being as well. I think a good relationship is where, ठीक है, I would love to take care of your emotions and be present for you. That is what a good partner does. But you should be doing the same for me. It's not just one-sided. आपके ख्याल में बीवी को हर महीने खाविन को बिल देना चाहिए कि इस महीने लॉन्ड्री के इतने पैसे हुए, खाने पकाने के, Yeah, definitely. और से 50-60,000 रुपीस अ मंथ जो उसका लेबर का बिल बना है वो बना के हस्बैंड को दे देना? हमारे इस्लाम में इस चीज़ का है कि आपकी बीवी अगर उस पर यह फ़र्ज़ नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें आपकी करे, आपके वालिदैन के लिए खाना पीना बनाए, आपके बच्चों की तरबियत करे, आपके बच्चों की तरबियत कर रही है, you need to compensate for that. How do you compensate for that? पर आवली को agreement करें आप पहले कि I think it should depend on the capacity of what the husband is earning, set a percentage to his overall monthly income, right. and that should be. हम the कहते हैं मैं तो 100% सैलरी बीवी को दे देता हूँ. No. If it's for groceries and bills, that's not fair. But there should be a separate set. But how would get my 150% सैलरी कहाँ से लाऊँ? That's on him. He needs to earn more then. Completely agree with you. Do not get married unless you're at a position जहाँ पे आप दो बंदे सपोर्ट कर सकते हैं. हमारे बहुत से young folks they get married early on, life struggle में गुजरती है because they can't support two people on the same salary. Yeah. I quite agree with you. देखिए जी, some highly educated women, even doctors हमारे मुल्क में, they choose to give up their careers and become housewives, which a lot of feminist friends of mine see as a betrayal. आप कैसा देखती हैं इसे? If you became a doctor out of necessity, or if you reached a certain profession जहाँ पे you had the passion but you don't really want that lifestyle for yourself, and if you feel that there is a comfort in just quitting and being a housewife, there's nothing wrong with that. If your husband is nice, if he's providing you enough, he's compensating for all the labor that you have to do, and you are sort of like a trophy, so it's not bad if that's the lifestyle that you want for yourself. Lekin haan, in the back of your mind, you shouldn't entirely just submit and be like, this is my life, that's it, I'm never going back. Keep your doors open. Whenever you want to go back, go back. If you don't want to go back, that's fine as well. You don't have to work your entire life away just to prove that you are a strong woman. I think us as women, we hate the idea of just being able to rest and letting someone else take care of us. But if you are in a position where you are being taken care of, sure, suit yourself. I love that for you. Who wouldn't want that? My ideal life would be that I do not have to do a job. I just stay at home, I take care of my family, and I paint a lot. Okay. Because painting is something that I love. It's my passion. I would never give up on that. Right. But to each their own. To each their own. Take Yeah. individual choice. Yeah. But when a woman is forced into leaving her profession to just be a housewife, to just cater for the family,
it's not very fair. I feel like that is So definitely मसला जो है unfair. वो फोर्स का है कि अगर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है तो गलत है, ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है तो इलीगल है. But who would care about that? यहाँ पे कत्ल होके लोग just get away with it. People get away with killing people and doing. People also go to the gallows for killing people. यहाँ पे कत्ल की सज़ा फांसी भी है. It's not like everybody can get away with murder. But who's gonna go to who's gonna get arrested for getting their wife to quit their job? मैं तो कहूँगा ये abuse के मामले में आता है. अगर husband ज़बरदस्ती करवा रहा है तो ये abuse का मामला है. Like imagine someone went to a medical school, they studied so much, they went to the training and everything, और उसके बाद बस एक बंदा आता है और वो कहता है बस अब आज से मैं तुम्हारी दुनिया हूँ and give up on everything and just focus on me, and because you're my wife, so that's it. I think that is definitely abuse. 25% of married women in Pakistan, तकरीबन 1/4, approximately that number of married women in Pakistan have reported domestic abuse or domestic violence. Less than half of them have sought any support. रिश्तेदारों को नहीं बताया, उन्होंने थेरेपिस्ट को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया. क्या ये लड़कियां रिश्ता बचा रही होती हैं? Obviously, एक तरीके से वो रिश्ता भी बचा रही होती हैं क्योंकि they have invested so much in it for like over the दो time. बच्चे हो गए, बच्चे लेके मैं दो कहाँ बच्चे हो गए, मैं जाऊँगी? कहाँ जाऊँगी? वो कहते होते हैं I ये मैं इतनी ख़वातीन से सुन चुका हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँगी कि बिकॉज उनके पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते. it's such a common thing. I don't know how common it is anymore, but वालिदैन कहते होते हैं अब तुम जा रही हो यहाँ से, तुम्हारी अब लाश ही वापस आए. ये तेरी डोली पे जाती खुद तेरी लाश ही वापस आए. अच्छा ठीक, न्यू डायलॉग जो है डोली जारी जनाजा वापस आए, वो ठीक है, सही है. Which is just really horrible. Which is stupid. क्या मतलब लाश वापस आए? And I've seen cases where जो औरत है वो अपने घर वालों के पास जाती भी है सपोर्ट लेने के लिए, वो उनके पास वापस जाती है और उसको समझा के वापस भेज देते हैं. They calm her down. They जाओ remind मार her. खाओ. They remind her that it's okay. You need to be more फरमाबरदार. तुम ना करो जो उसको गुस्सा दिलाती है चीज़. तुम ना करो. Just avoid doing that. And it's nothing that just makes him angry. He just needs no reason to actually be angry. उसको अपना रेज रूम चाहिए. हाँ, उसको अपना रेज रूम चाहिए और उसको एक बीवी की शक्ल में एक रेज रूम मिल गया होता है और वो उसको घर वाले वापस भेज देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जाओ सब्र करो, इट्स फाइन, ही इज़ योर हस्बैंड नाउ, यू हैव किड्स विद हिम. और कहते हैं बच्चे हो गए तो अब ताला लग गया है, कड़ियाँ लग गई हैं पैरों पे. जितने बच्चे उतनी आपके पैरों में कड़ियाँ लगी हुई हैं. Where are you gonna go with 5 kids? क्या हर खानदान में कोई एप्स्टीन होता है? Yeah. You agree with that? Which is just horrible. Which is horrible. I feel like there is always this one predator, just roaming around in the face of a chachu, a mamu, a taya, or just Khalu ya koi bhi, anyone. right. Anyone. And it is so scary. Like, how do you protect your kids and in your own family? How do you protect your wives in your own family? It's a very sensitive topic. It's a very difficult topic. But to you talk agree with the about. idea कि हर Yeah, फैमिली yeah. को उनको एप्स्टीन है Yeah. और हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. Yeah, and sometimes they're not even rich. And at least had money, but they're not even rich, and they're just like, Money is no excuse for crime. yeah. There are so many layers of things that are wrong with the family's dynamic in so many ways, and where is our attention in fixing or acknowledging or sitting with any of that? We don't want to talk about it. We don't talk about it because अगर कोई लड़की कहे भी मुझे डिप्रेशन है तो उसकी माँ ही कहती है कि नज़र लग गई है, जो कि बड़ी एक्सेप्टेबल बात है. पूरा ख़ानदान मान लेगा हाँ यार नज़र लग गई बेचारी को. कोई ये नहीं मानेगा उसे थेरेपी चाहिए. Yeah, ज़्यादा हुआ तो काला जादू हो गया इस पे. क्या जादू चक्कर है ये? होगा. हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जादू, नज़र, इससे क्यों कनेक्ट कर रहे हो? It's the lack of education and more of that superstitious belief, which is easier to understand because you've heard so much about it growing up, but you've never heard about psychology. You don't even, most of the people here don't even know what the word psychology means. साइकोलॉजी से याद है, ज़रा पेरेंट्स की साइड पे देख ले. पेरेंट्स मुझे कहते हैं जी कि हमारे बच्चे इंस्टाग्राम पे जाते हैं, कोई टर्म पढ़ते हैं, फिर आके वापस कहते हैं अब्बा जी you're a narcissist. Is that true? Are you guys using pop psychology to blame your parents for all your own messes? I've never done that. अच्छा, आपको नहीं कह रहा मैं जल्दी. I've never done that, but I think kids these days do that. Okay. Lekin I think nicer approach to that would be कि अच्छा you sit your kid down and you're like अच्छा you think I'm a narcissist? Okay, let's talk about what a narcissist is. Why do you think I'm a narcissist? How can I be better for you? It's so simple. It's so simple. Haven't we taken it a bit too far कि हम दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, हम एक लेबल लगा दिए कि भाई वो बंदा तो नार्सिसिस्ट है, वो बंदा टॉक्सिक है.
क्या हमारी सोसाइटी से आगे नहीं चल सकती? ऑब्वियसली चल सकती है, लेकिन अभी हमारी सोसाइटी उस स्टेज पे पहुंच गई है जब आपको नया खिलौना मिलता है ना, तो यू जस्ट प्ले अराउंड विद इट अ लॉट अंटिल इट ब्रेक्स एंड देन यू आर लाइक ओके, यू नो व्हाट, देयर इज अ बेटर वे ऑफ यूजिंग इट. So I think it's okay. Let them explore the vocabularies and the understanding of what these terms mean. इस्लाम आपको पेरेंट्स की इज्जत सिखाता है, मगर ये एब्सोल्यूट ब्लाइंड ओबीडियंस क्या ये इस्लाम से आई है, हमारे यहाँ कल्चर से आई है? I think it's definitely just cultural. क्योंकि इस्लाम में भी आपको you are given the options of making your own decisions in a way. अगर एक लड़की एक शादी से रजामंद नहीं है तो उसका निकाह होता ही नहीं है. क्या मज़हब फैमिली कंट्रोल को चैलेंज भी कर सकता है? Obviously it can. I feel like मज़हब में अगेन आपको वायलेंस की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि आप अपनी औरत को या अपने बच्चों को मारो. आप नहीं मार सकते. आपके हाथ में जो सिंबल्स हैं, हाउ डू यू डिस्क्राइब देम टू अ व्यूअर? अगर आपके साथ आपकी पेंटिंग को देख रहा हूँ, हाउ डू यू डिस्क्राइब द सिंबल्स देयर हैं? So this is my favorite topic. So I paint a lot of fishes. I paint a lot of falling men from the sky. It's sort of like a landscape of doomsday. It's like the world has ended. It's a dream-like world. It's a fever dream. So I paint my work in a very colorful way, which does not directly appear to be very dark. Unless you understand the warmth and the cold colors that are being used. फिर आपको थोड़ा सा लगता है कि it's actually not a very pleasant color palette. But these colors are symbolic of trauma, of sins, of pain, of loneliness, of grieving, of femininity, masculinity, and all of these things. How do you see sin? आप गुनाह को क्या देखती हैं? It's a very vibrant, that green color that I use. मगर वो गुनाह को आप समझ, what is आपके नज़र में गुनाह क्या है? So for me, if I just talk about my work, in my work, the sins are the damage that we cause to each other. That's majorly what I'm talking about in the terms of sin. It's not okay, oh, you did something wrong morally. It's just about the damage that you're causing to the people around you, mainly to your family, to yourself. The emotional damage is the sin. किस मुंह से कोई अज़मत आदम का नाम ले जब आदमी फरेब करे आदमी के साथ? Yeah. जब इंसान को डैमेज करे तो फिर आप उसे सिन नहीं कंसिडर करते. सिन से कुछ याद आया जी, इंडिया में कुछ आप ही की एज के जवान बच्चे जो हैं वो निकल आए हैं सड़कों पे और अभी उन्होंने फाइनली अचीव कर लिया है शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा. मगर इंडिया की जेन ज़ी seems to have the drive and the motivation that the Pakistan Gen Z doesn't. क्या चक्कर है ये? हमारे पाकिस्तान में आप प्रोटेस्ट करने के लिए निकले ना, तो आपके कत्ल हो जाते हैं. ठीक है. हाँ. There is no, ठीक है, वहाँ पे भी लाठीचार्ज वगैरह हो रहा था and people were getting disciplined in a certain way by the government, by the police forces. But in Pakistan, we do not see the kids as kids. We see them as just rebels. हम उनको एक खतरे की तरह देखते हैं. We don't realize that they have a voice and they have the right to voice whatever they need to talk about. I don't know. I shouldn't talk about that. Never mind. So we lose a lot of kids in universities. How do you because mean of lose? They die. A lot of kids? We do lose kids. कितने % पॉपुलेशन आपकी यूनिवर्सिटी की डेथ हो चुकी है? I don't know. I don't want to give the numbers. Okay. And whatever reasons are. Lose them to what? Lose them to the education system, to the care that is being given to them. A lot of the times it's just neglectfulness इतनी ज़्यादा होती है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की that we do not have anything to support the emotional well-being of our students at all. I think I was very lucky to be in a department where our faculty was actually like our parents. They were like our mothers. They would actually sit down and talk to us about things, and they would check up on us whenever they felt like a certain kid was slightly feeling off. So we got a lot of emotional care as students, but it does not happen in so many of our departments. So as students, we don't have a voice. If you as a student are going through depression, that is also labeled as an excuse. Why are you making an excuse?
if you just don't want to study, if you just you're just not focused, I don't care whatever the reason is, get your shit together and perform better. So even our teaching styles are very toxic. So when it comes down to protesting and why we're not able to do that in a safe way is because if we do it, एक तो हमारा मजाक बन जाता है और हमारे अपने ही majority of our own kind are not really in the favor of us having a voice anyway. Do you think वही protest पाकिस्तान में कभी हो सकते हैं? I don't know. I don't नहीं हो सकते because हमारे यहाँ सीधे फायर चल जाएंगे. हाँ, फायर चल जाएंगे, आपके घर वाले नहीं हमको निकलने देंगे, हमें औरत मार्च पे नहीं जाने देते. औरत मार्च पर जाने देना इतना एक उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती है कि नो, you're not gonna go there. मसला परमिशन का है. अलाउ नहीं है, वो उनकी वैल्यूज़ का अलाइन नहीं करता. They don't want their kids to be in an unsafe situation, even if it's for the right purpose. They would rather protect than protect it in the longer run. क्योंकि protection वो थोड़ी है कि आपने यहाँ जाने से रोक दिया. What about the future that is being risked by what the protest is about? देखिए, as far as I can see, the independence of women, आज़ादी निस्वा का मैं तो कायल हूँ. मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आज़ादी निस्वा से आप लोगों का क्या मतलब है और आज़ादी निस्वा से आपके पेरेंट्स का क्या मतलब होता है? What is freedom for women in terms of what you want it to be and what your parents see it as? For me, independence is about being able to get myself educated. ठीक है. Being able to work. ठीक है. Being able to earn my own money and Right. have that money to myself. Being able to have my opinion and being able to voice it. It's not about rebelling. It's not about I want to go party, I want to go out, I want to do everything. बस हद से बाहर निकलना. It's not that. I think anyone who reaches a certain point in their adulthood, they realize what is good for them, what is bad for them, and they are a better judge of it than anyone else could be. Let me ask you this. कभी आपने rationally अपने पेरेंट्स से बात की कि यार मैं ये चीज़ें चाहती हूँ और उसकी ये वजूहात है और rational reasons ये है मेरे करने के? Yeah. और उन्होंने आगे से क्या कहा? I think I've reached that point in my adulthood where I have been able to talk about these things. Right. Like, मुझे तो 16 साल की थी तब से they were after me कि get married, and they've given me so many रिश्ता from. आपने कहा नहीं कि illegal है? 16 साल की शादी कर नहीं सकती आप? I did say that, and then I had my reasoning. मैं हर रिश्ते में कोई ना कोई excuses निकाल लेती थी कि this is this is Your that. parents wanted you to commit an illegal act by getting married at 16. आप जेल जा सकते हैं. उस टाइम हम सऊदीया में थे. हाँ, सऊदी में 16 है. It's fine. हाँ, ठीक. Yeah. तो उसके बाद I think after pushing it away for such a long time, now that they keep bringing up that conversation, I'm like, you know what? This is the reason why you see all these women around you. We see so many cases. आपको पता है कि मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ because मैंने घर पे ये सब कुछ देखा है. तो मेरा घबराता है दिल कि मैं अगर घर पे किसी को लेकर आ रही हूँ, if a potential husband is coming to meet my family and my dad does not respect my mom in front of him, or my dad does not respect me in front of him because he's so used to that kind of behavior or language, this person who's coming to see me as a wife is going to see, okay, इस घर का ये निज़ाम है, this is how much respect the women get here. So मैंने भी इसी standard पर आ सकता हूँ. It's fine. Who's gonna tell me that this is not okay? So I talked to my parents. I was like, you know what? It's a very valid concern that I have seeing these things happening in my own family. I don't feel safe enough to commit to a marriage right now. And let me study. Let me work. Let me do what I need to do. And whenever there is a right opportunity, I wouldn't mind. So, and even with other choices that I make in my life, I think I've been able to rationally talk to them about these things now. Final question जी, इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी कॉकरोच पार्टी बनती है, would you join it? Yeah, for sure. I think it's ridiculous in a great way. Why not? Why not? Thank you, Vidya. You've been very kind. Really appreciate your time. You've been very nice. Love talking to you. Thank you, Gajin. Thank you.